Morning students, we have discussed about the oxidation and reduction. Let shortly discuss once again. Oxidation in term of oxygen and in term of hydrogen. Okay. In term of oxygen, oxidation is gain of oxygen. Okay. In term of hydrogen, loss of hydrogen. Right? Where gain of oxygen take place, it is oxidation. Where loss of hydrogen take place, it is oxidation. Then in term of oxygen reduction is loss of oxygen. Okay, and hydrogen gain of hydrogen. Okay, we have to remember these four things: oxidation, gain of oxygen; reduction, loss of oxygen; oxidation, loss of hydrogen; reduction, gain of hydrogen. Now there are two more definitions which we need to remember. These are oxidizing agent and reducing agent. Okay, now oxidizing agent is, these are the agent which first thing is give oxygen. Okay, which give oxygen, or second which gain hydrogen. You can say it is gain or we take hydrogen. Okay, so from both of these two, what definition we get for oxidizing agent? Oxidizing agent, a substance which undergoes reduction. Okay, right? Because give oxygen means loss of oxygen, and the substance which loss oxygen, its लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? वो एजेंट या वो सब्सटेंस जिसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, मीन्स जो ऑक्सीजन दे रहा है और हाइड्रोजन ले रहा है, खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, बट वो दूसरे किसी सब्सटेंस को क्या कर रहा है? इट्स मेकिंग ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशंस ऑफ अदर सब्सटेंस. ओके, एंड undergoes reduction itself. Then what about reducing agent? Just reverse of this, which give hydrogen or second gain oxygen. That means what will be the definition? A substance which undergoes oxidation, right? मीन्स जो हाइड्रोजन को गेन करे, हाइड्रोजन को गिव अप करेगा, लूज करेगा, और ऑक्सीजन को गेन करेगा. टेक ऑक्सीजन. ओके, मीन्स इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. जहाँ ऑक्सीजन का गेन की बात आई, क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा. मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जिनका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट वो दूसरे किसी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं? दे आर रिड्यूसिंग सम अदर सब्सटेंसेस. ओके, now we have talked about oxidation and reduction. We have one more reaction, redox reaction. The redox reaction is a reaction. Redox reaction is a reaction where the reduction and oxidation take place simultaneously. Oxidation plus reduction, both take place simultaneously, right? In same equation. एक ही इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स
equation or redox reaction. Let's understand these oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent by few examples. First example, we already discussed this. Copper oxides, when hydrogen gas is passed through copper oxide, it turns to copper and water. Here what we are observing, copper oxide is losing oxygen and become copper, means loss of oxygen, and loss of oxygen is reduction. Okay, and what we are saying, जहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, वो सब्सटेंस क्या होगा? इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Okay, now let's see hydrogen. It is gaining oxygen. Hydrogen is gaining oxygen, become water, means gain of oxygen. Okay, and gain of oxygen is oxidation. So hydrogen is reducing agent. जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन. बट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और हमको ऑक्सीडेशन हमेशा रिएक्शन के ऊपर शो करना है एंड वी हैव टू शो रिडक्शन बिलो द इक्वेशन. ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. Ferric oxide with aluminium give iron plus aluminium oxide. Okay, iron oxide. Now here what we are observing, in this ferric oxide is losing oxygen and become iron. Okay, that means loss of oxygen, right? Loss of oxygen means reduction, and the substance which reduce itself is oxidizing agent. What about aluminium? Aluminium is gaining oxygen. See this, aluminium is gaining oxygen. Here it is aluminium, here it is aluminium oxide. With gain of oxygen it become aluminium oxide. So gain of oxygen, and gain of oxygen is oxidation. And the substance which undergoes oxidation is reducing agent. It will be a reducing agent. Okay, here you might know this symbol. This is a symbol of heat. Energy. Triangle on arrow, the symbol of heat. Okay, we already discussed the redox reaction, the reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously. Okay, that means the last two example which we have discussed is redox reaction, where reduction and oxidation both are taking place simultaneously. Let's see another example. Third example, zinc oxide with carbon, when heat energy is applied, it becomes zinc and carbon monoxide. This is the formula of carbon monoxide. Now we are writing the oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent in different way. We are making a table. Oxidation, carbon is changing to carbon monoxide, right? Carbon is changing to carbon monoxide, means oxidation is of carbon, right? Carbon to carbon monoxide.
reduction, zinc oxide is changing to zinc, right? So reduction is zinc oxide to zinc, right? मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका हो रहा है, कार्बन का, और रिडक्शन हो रहा है किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का. अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो हियर जिंक ऑक्साइड is oxidizing agent and carbon is reducing agent because it gain oxygen and zinc oxide lose oxygen. So जो ऑक्सीजन को लूज करेगा वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होगा, जो गेन करेगा. ओके. फोर्थ एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड विथ क्लोरीन to give hydrogen chloride and sulfur. Okay, now here hydrogen sulfide is losing hydrogen. Okay, what we are observing, hydrogen sulfide is losing hydrogen and become sulfur, right? And chlorine, hydrogen sulfide is losing hydrogen and chlorine is gaining hydrogen. Chlorine is gaining hydrogen. Okay, now what is our definition in terms of hydrogen? If hydrogen loses, ठीक है, hydrogen sulfide lose hydrogen and become sulfur, so loss of hydrogen is, here it is loss of hydrogen, and here chlorine is gaining hydrogen, gain of hydrogen. So loss of hydrogen is oxidation, and gain of hydrogen is reduction. Gain of hydrogen is reduction, right? So ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का. ना यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी क्लोरीन, एंड रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके. Next, manganese oxide with hydrogen chloride to give manganese chloride plus water plus chlorine. Okay, now here what we are observing, one is losing oxygen, another one is losing hydrogen. Okay, one is losing oxygen, another one is losing hydrogen. Manganese oxide is losing oxygen and become manganese chloride. Okay, and hydrogen chloride is losing hydrogen and become chlorine. Okay, so loss of oxygen means reduction. Okay, HCl to chlorine, loss of hydrogen. Or definition say it is oxidation. Okay, so oxidation किसका हो रहा है, मैंगनीज, सॉरी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड का. ठीक है. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अपोजिट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो, जो खुद जिसका रिडक्शन हो रहा है, मीन्स मैंगनीज ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और reducing agent जो जिसका खुद का oxidation हो रहा है means HCl. ओके, एक बार माने की चीज़ नहीं है. We have to see this 2-3 times, then we will get what is oxidation, what is reduction, what is oxidizing agent, what is reducing agent. Go through it more than 1 or 2 times. Okay, after that try to solve the examples that are given in book. Okay, or the question which are given in book for oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. Okay.